Hello and welcome. We are beginning a new chapter today in Science 1, which is chapter number 9, Carbon Compounds, and this is our first learning session. So, today in this learning session, we are first going to introduce this chapter and then we're going to look at ionic and covalent bonds. Okay, so our objective for today is going to be students will be able to explain covalent bonds in carbon. Okay. So because we are beginning a new chapter, we'll first explore why should we study this chapter or why is it important for us to study this chapter. Okay. So point number one, carbon is the most important element to life. Without this element, life as we know it would not exist. Okay, pretty self-explanatory. Carbon compound life form होने के लिए काफी important है. Okay. Next, why is carbon so basic to life? Basic to life and important to life. Okay, so why is carbon so important for life? The reason is carbon's ability to form stable bonds with many elements including itself. Okay, क्या खासियत है कार्बन की जो उसको लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट बना देता है? उसकी खासियत है कि वो खुद के साथ काफी स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि वो खुद के साथ बॉन्ड कर सकता है. इट कैन मेक वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, और जितना लंबा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उतना ज्यादा वैरायटी मिल सकता है तुम्हें, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट, this property allows carbon to form huge variety of very large and complex molecules, right? As I said, right, because carbon खुद के साथ bonds बना सकता है, कार्बन का एक लंबा सा चेन बन सकता है, और वो कार्बन का अगर लंबा चेन बन गया तो यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट आ सकता है, वहां पे एक दूसरा एलिमेंट आ सकता है, बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी, राइट? In fact, there are nearly 10 million carbon-based compounds in living things. Okay, so carbon is widely found in living things, plant as well as animals. उसमें carbon compounds होते हैं, and in living things आज तक almost 10 million carbon-based compounds they have found. Okay, 1 million is equal to 10 lakhs. So 10 million is 1 crore. So almost 1 crore carbon के compounds they have found in living things. That is why it is so important for us to study this chapter and to study carbon compounds, because they are very much important for life. And if you want to understand how life works and how different elements and compounds come together to form life, then you have to study carbon compounds. Okay. Great. Yes. So let us begin this chapter by solving a few can you recall type of questions on page number 110. So all these three questions are very easy. I think you all should be able to answer them by yourself. So what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you all to read all the questions and write down the answers in your notebooks by yourself. And then after you have written it, then you all can again play the video and cross check the answers. Okay, I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, I hope you all have written answers to all three questions in your notebook by now. Now we will see what are the answers. Okay, first, what are the types of compounds? So the answer is there are two types of compounds. First is organic compounds and second is inorganic compounds. Okay, now organic compounds, what does it sound like? Organ, right? Organ jaisa. ऑर्गन किस में होता है? लिविंग थिंग्स में होता है, लिविंग बीइंग्स में होता है, राइट? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या? कंपाउंड्स दैट आर जनरली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरली. ओके, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग बीइंग के बाहर भी मिल सकते हैं, बट मोस्टली लिविंग बीइंग्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक का ऑपोजिट है इनऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक का मतलब अगर लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स में था, सो इनऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग्स में नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर यानी क्या हो गया? कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी और इनसाइड द अर्थ. लैब में तो साइंटिस्ट आर गोइंग टू मेक, एंड इन टुडेज डे एंड एज in laboratory scientists can also make organic compounds. That's why ये जो रूल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. बट इन टुडेज डे एंड एज लेबोरेटरी में also you can make organic compounds. Okay, and inside the earth also inorganic compounds are going to form. Why are they going to form? Because earth has lot of different elements in it, right? And it has lot of heat which is coming from the inner part of the inner core. Hence lot of chemical reactions are also going to take place inside our earth's crust.
okay, or even below our Earth's crust, and that is where inorganic compounds are going to be formed. So what are the two types of compounds? Organic, जो living beings में मिलेंगे और living organisms में मिलेंगे, and inorganic compounds जो mostly laboratory में मिलेंगे और earth में मिलेंगे. Okay, so that was your answer to the first question. Next question is, object in everyday use such as foodstuff, fibers, paper, medicines, wood, fuels are made of various compounds. Which constituent elements are common in these compounds? Okay, so I don't know if how many of you are able to answer this, but for this you need some prior knowledge of chemistry. Okay, and the answer is mostly these everyday objects have only three main elements. Those elements are carbon, as you have seen. Why carbon? Because carbon has the ability of combining with itself, making stable bonds with itself. Hence, carbon is an important element. And then hydrogen. Why hydrogen? Because it's the simplest element there is in the universe. And oxygen, because we see oxygen is present in our air and it is highly reactable. So you have seen, right? Oxygen is electronegative, yani it always wants to react it always wants to react and become more stable. So hence, majority of the everyday use items or objects will have these three elements: carbon, hydrogen, and oxygen. Okay. Next, to which group in the periodic table does the element carbon belong? Write down the electronic configuration of carbon and deduce the valency of carbon. Okay, so this again, I hope you all were able to solve by yourself. Okay, because you've already seen these things or these type of questions in detail in periodic classification of elements chapter, right? So carbon belongs to group 14 in the periodic table. If you all cannot remember, if you all cannot visualize the periodic table and carbon's position inside the periodic table, please turn your pages of your textbook and go to periodic classification of elements, and there you all can find carbon belonging to group 14. Okay, group yani vertical columns. Then carbon's atomic number is 6, right? We have by hearted the atomic numbers of all first 20 elements. So carbon 6th number पे आता है. What does atomic number mean? उसके पास 6 protons or 6 electrons है. Okay, so electronic configuration. What is electronic configuration? How are the electrons arranged in various orbits around the nucleus? Okay, so because atomic number is 6, it means that it will have 6 protons in the nucleus and there will be 6 electrons revolving around the nucleus in different orbits. So कौन सी orbit में कितने electrons है, that information is given by electronic configuration, right? So first orbit का capacity है 2 electrons, second orbit का capacity है 8 electrons, third orbit का capacity है 18 electrons, but that will also generally try to keep only 8 electrons. Okay, because 8, whenever it has 8 electrons, it has a more stable form. It becomes more stable. Okay, so the first 2 electrons will go in the first orbit and the remaining 4 electrons will go in the second orbit. Okay, so it contains 4 valence electrons. What is valence electrons? Electrons in the last orbit are called as valence electrons, right? So it what does carbon want to do? It wants to keep its last orbit either completely filled or completely empty, right? So अगर उसको completely empty करना है last orbit, so it will have to donate 4 electrons, and अगर उसको completely fill करना है last का orbit, then it will have to accept 4 electrons, right? So it can either take 4 electrons or give away 4 electrons. In any case, there the valency of carbon will be 4. Okay, so if carbon needed only 2 electrons and had to give away 6 electrons, तो वैलेंसी 2 हो जाता है. जो कोई भी छोटा नंबर होता है वो वैलेंसी हो जाता है, बट यहाँ पे दोनों नंबर सेम है. ओके, equal number of electrons it will have to take to complete the octet and equal number of electrons it will have to give to complete the duplet. Okay, duplet मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वी कॉल इज ऑक्टेट. ओके, सो ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट. ड्यूप्लेट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ऑक्टेट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट के लिए. ओके, सो valency of carbon is 4. So next again we are going to solve some can you tell type of questions given on page number 110, and we are going to do the same thing. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause the video here, read all 3 questions and write down the answers in your notebooks by yourself, and once you're done writing answers in your notebooks by yourself, then you all will again play the video and we will discuss the correct answers. Okay,
Okay, I hope you pause the video and have your answers ready written in your notebooks. Okay, now let us discuss the answers. First question, what is meant by a chemical bond? Okay, so it is the force of attraction by which atoms or ions are held together. Okay, what are ions? Basically, atoms के पास equal number of protons and electrons होते हैं, right? Protons are positively charged, electrons are negatively charged. So अगर equal number of protons and electrons होंगे तो atom का charge क्या हो जाएगा? It will be zero, right? And it will be neutral. ना ही positively charged होगा, ना ही negatively charged. Whenever atom gets either positive charge or negative charge, it is called as ion. Okay. सो एटम्स को या आयंस को जो साथ में जुड़े रखता है वो क्या होगा, एक फोर्स होगा, राइट? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. ओके, सो in many illustrations or in many photos you all must have seen this kind of bonds, right? So here the circles or the spheres are atoms and the sticks joining them are the bonds, right? But in reality you won't see such a picture when you actually use a very high power microscope. This is not what you will see because ऐसे बीच बीच में डंडियां नहीं होती या फिर ऐसे बीच बीच में there are no sticks in between atoms in which which we assume to be chemical bond. Okay, यहाँ पे बस दो एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसको इमेजिन करने के लिए, उसको इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टिक डाल देते हैं. ओके, बट एक्चुअल में वहां पे स्टिक नहीं होता. ये स्टिक सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सो दैट वी कैन इजीली सी कि कहाँ पे कैसे बॉन्ड्स फॉर्म हुए. ओके, सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड्स आर नॉट दी स्टिक्स जो साथ में जोड़े रखते हैं. एक्चुअल में वहां पे कोई लकड़ी नहीं रखी है, राइट? वो बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा फोर्स है जो दो एटम्स को साथ में जोड़े रखेगा. ओके, एंड वो फोर्स को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं. नेक्स्ट, what is the number of chemical bonds that an atom of an element forms called? Okay, so again I'm going to read that question. What is the number of chemical bonds that an atom of an element forms called? अगर एक एलिमेंट चार बॉन्ड्स बना रहा है सो फोर, ये जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे? अगर एक एटम थ्री बॉन्ड्स बना रहा है सो ये जो थ्री नंबर है उस एलिमेंट का क्या होगा? So on and so forth. That's what the question is telling you. So basically the number of bonds that an atom makes is called its valency, right? Valency मतलब क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो लेने पड़ेंगे या तो देने पड़ेंगे ताकि लास्ट का जो ऑर्बिट है इट इज आइदर कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी. सो जो कोई भी नंबर होगा उतने ही बॉन्ड्स, उतने ही केमिकल बॉन्ड्स वो एटम बना पाएगा, राइट? हेंस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एक एटम बना सकता है उसको हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं. जितना वैलेंसी होगा उतना ही केमिकल बॉन्ड्स बना पाएगा. ओके, नेक्स्ट, so let's understand this with an example. Okay, so here you have sodium which has 11 electrons. So first orbit will have 2 electrons, second orbit will have 8 electrons, and the last orbit will have 1 electron. So what is its valency? It, for its last orbit to either be completely filled or completely empty, it either has to take 7 electrons or give away 1 electron, right? What is easier? Giving away 1 electron. Hence its valency is 1, right? So sodium can make only one chemical bond. Similarly, here you have carbon. Carbon has atomic number 6. So 2 electrons in the first orbit and 4 electrons in the second orbit. So it can either take 4 electrons or give away 4 electrons. Both the numbers are equal, so its valency is 4. So carbon can only make 4 bonds. Okay, it won't be able to make 5 bonds. That is the meaning of valency. कितने chemical bonds बना पाएंगे. Okay. Next, what are the two important types of chemical bonds? So the two important types of chemical bonds are ionic bonds and covalent bonds. Okay, that's all y'all had to write in answer number 3. Okay, so now let us look at ionic bonds. Okay, here you have a sodium atom and here you have chlorine atom. So sodium atom ka atomic number I just explained y'all is 11. So 2 electrons in the first orbit, 8 electrons in the second orbit, and third orbit mein only 1 electron, right? And chlorine has 17 electrons. So 2 electrons in the first orbit, 8 electrons in the second orbit. So 2 plus 8 has become 10. बच्चे कितने? 7. So 7 electrons in the last orbit. Now let us find the valency. So sodium has to either take 7 electrons or give away 1 electron to make the last orbit completely filled or completely empty. So what will be easier? Giving away 1 electron will be easier. Taking 7 electrons will be difficult. So इसका valency है 1. It wants to give 1 electron away. Secondly, chlorine को
लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट कैन आइदर गिव अवे 7 इलेक्ट्रॉन्स और टेक 1 इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज इजी? टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज आल्सो 1. तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देना है ताकि लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, एंड क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है सो दैट लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाए. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज sodium is going to transfer 1 electron from its last orbit to chlorine's last orbit. That's what's going to happen. Okay, so when sodium loses 1 electron, when you lose electron, you're losing negative charge, right? Whereas न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज था वो उतना ही है. सो पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हुआ है, बट नेगेटिव चार्ज कम हो गया. तो कौन सा इंक्रीज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, राइट? सो सोडियम विल हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया. Similarly, chlorine is receiving 1 electron. So electron is negatively charged. When you get 1 extra electron, you are getting negative charge. So chlorine पे negative charge आ जाएगा because of this extra electron. Okay. So sodium is positively charged, chlorine is negatively charged. So both have become ions. यहाँ पे ये दोनों atoms थे क्योंकि वो लोग न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था. यहाँ पे भी वो ions बन गया क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. एंड वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो अभी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी आर गोइंग टू कॉल एज आयोनिक कंपाउंड्स. व्हाई आर वी कॉलिंग इट आयोनिक कंपाउंड्स? बिकॉज उसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं, राइट? एंड वो जो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आयंस फॉर्मेशन के वजह से है, राइट? आयन फॉर्मेशन के वजह से. सो दिस वी कॉल एज ionic this we call as ionic bond. Okay, so if I ask you to define ionic bond, the definition would be ionic bonds are bonds in which electron is transferred from one atom to the other. Okay, wherever there is transfer of electrons, permanent transfer of electrons, that bond is called as ionic bond, or the compounds which have ionic bonds are called as ionic compounds. Okay, so we're done with ionic bonds and ionic compounds. Next, let us look at covalent bonds and covalent compounds. Okay, so here you have hydrogen. So hydrogen का यहाँ पे nucleus है, and you have one electron in hydrogen's orbit, first orbit. Similarly यहाँ पे भी same hydrogen atom है, and here you have oxygen. Okay, oxygen, this is your oxygen का nucleus. First orbit में you have 2 electrons. First electron is over here and second electron is over here. So ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? आई थिंक इट इज 8, राइट? सो 8 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,6. सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे. व्हाट इज इजियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना इजी होगा. सो its valence is 2. So oxygen needs 2 electrons. Okay, and hydrogen can either take 1 electron or give away 1 electron. So here in the case of hydrogen and oxygen, instead of permanently transferring electrons, what they are going to do is they are going to share their electrons. Okay, so hydrogen is not going to give away its electron to oxygen, and nor is oxygen going to give away its electron to hydrogen. What they're going to do is they're going to share these 2 electrons amongst themselves, and these 2 electrons are going to be shared between this hydrogen atom and this oxygen atom. So if you see here, 1 electron is from hydrogen, 1 electron is from oxygen. Similarly here, 1 electron is from hydrogen, 1 electron is from oxygen. So ये जो 2 electrons है, ये हाइड्रोजन का भी पार्ट है और ये ऑक्सीजन का भी पार्ट है. So if you check now, hydrogen has 2 electrons in its first orbit. So the duplet is complete. First orbit hydrogen का completely filled हो गया. So hydrogen becomes more stable. Similarly, this hydrogen also becomes more stable because 2 electrons आ गए. Whereas the same 2 electrons are also part of oxygen's last orbit. Okay, so अभी oxygen के last orbit में कितने हो गए? यहाँ पे first electron, second, third, fourth, यहाँ पे fifth and sixth, यहाँ पे seventh and eighth. So oxygen के भी last orbit में 8 electrons हो गए. Duplet complete हो गया. So it is also stable now and it is happy. So both these hydrogen atoms are happy and this oxygen atom is also happy. Why? Because of sharing of electrons, they can complete their last orbit. Okay, and which molecule is this? H2O, right? Water molecule. So in water molecule there is no permanent transfer of electrons. What happens in water molecule is they are sharing electrons for their own benefits. So that is covalent bonds. Okay, what are covalent bonds? Bonds in which electrons are shared between atoms
so that they can complete their octet and duplet is called as covalent bonds, and compounds which have covalent bonds are called as covalent compounds, right? So now we have seen ionic bonds and ionic compounds, and we have seen covalent bonds and covalent compounds. Okay, now let us see the difference between them. Okay, you all have studied two types of bondings and two types of compounds. Now let us see what are the differences between them. So covalent bonds, first, they have weak forces of attraction between the molecules. Okay, so um, covalent compounds में covalent bonds है, and covalent bonds are not very strong. Okay, वो थोड़े weak bonds होते हैं, बहुत वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. वेयरएज आयोनिक कंपाउंड्स, बिकॉज उसमें आयंस फॉर्म होते हैं, उसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट नेगेटिव चार्ज होगा, और उसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. बिकॉज ऑफ दैट there are strong forces of attraction between the ions. Okay, that's point number one, or difference number one. Second, they do not form ions. Okay, we have just seen, right? Covalent bonds में और covalent compounds में ions form नहीं होते, whereas in ionic compounds ions are formed. Okay, next, they have low melting and boiling points, whereas ionic compounds will have high boiling and melting points. Why is that? देखो, covalent compounds में there is weak force of attraction, right? वो जो force of attraction है वो strong नहीं है, so वो जो bonds है वो तोड़ना काफी easy होगा. For melting a compound or for boiling a compound, you have to break the bonds, right? And for breaking those bonds, if the forces of attraction is not very strong, वो easily bonds break हो जाएंगे. Whereas ionic compounds में, because the force of attraction is so strong, it will generally have high melting points and high boiling points. तो इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, they are poor conductors of electricity and they are good conductors of electricity in molten and aqueous state. Okay, so why are they poor conductors of electricity, the covalent bonds? So the electrons are being shared between two atoms, right? Already एक atom, already दो atoms कुछ electrons को share कर रहे हैं, so there are not many electrons to move around. And what is electricity? Movement of charge which is through electrons. तो अगर electrons available ही नहीं है, electrons already दो atoms share कर रहे हैं, so there won't be any electrons left for electricity. Whereas ionic compounds are good conductors of electricity, but only in molten state and aqueous state. Okay, molten मतलब क्या? Molten means melted by heat. अगर ionic compounds को तुम लोग heat करके melt कर दोगे, in that state it can conduct electrons or conduct electricity. And in aqueous solutions, what is aqueous solution? Aqueous any solution in which your solvent is water. Okay, जिसमें पानी होगा, जिस solution में पानी होगा, that is called as aqueous. Okay, next, they are readily soluble in solvents. Okay, what does soluble mean? Soluble means mix हो सकता है. Okay, so they are readily mixing in solvents. What is solvent? So whenever you form a solution, it is formed by two things. Okay, solute plus solvent. For example, अगर मुझे नमक वाला पानी बनाना है, so I will first take water, and water के अंदर में I will put salt, right? So salt will become my solute जो मैं mix कर रहा हूँ, and जिसके अंदर mix कर रहे हैं, पानी के अंदर mix कर रहा था मैं salt, so that will become my solvent. फिर वो जो salt plus water का solution बन जाएगा, that we will call as solution, right? जो mixture बनेगा salt plus water का, that we will call as solution. Okay, तो solute मतलब क्या mix कर रहे हो, solvent यानी क्या, जिसके अंदर mix कर रहे हो, और finally जो मिल जाता है mixture, that is called as solution. Okay, so they are readily soluble in solvents like, यानी कौन सी चीजों में इजीली मिक्स हो सकते हैं वो, केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है, दे विल इजीली मिक्स इन केरोसिन, पेट्रोल वगैरह, बट वो पानी में मिक्स नहीं होगा. दिस इज अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड्स. एंड आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर. सो आयोनिक कंपाउंड्स पानी में मिक्स हो जाएंगे, बट केरोसिन, पेट्रोल वगैरह में मिक्स नहीं होंगे. So these are the differences between covalent compounds and ionic compounds. Okay, next, so there's a question. Okay, what about carbon? Is carbon an ionic compound, and or is carbon a covalent compound, and why? What is the reason of your answer? So the answer is, we have seen that valency of carbon is 4 and its electronic configuration is 2,4, right? So to become stable, it has to have the following configuration. या तो first
या तो सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए, तो सेकेंड ऑर्बिट होगा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर जो सेकेंड ऑर्बिट है कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, सो इट द सेकेंड ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ 4 शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हीलियम। ओके, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है। और ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन। नियॉन में देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। सो कोई भी एलिमेंट ले लोगे ना, दैट एलिमेंट इज ट्राइंग टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ओके, व्हाट आर नोबल गैस? ग्रुप 18 में, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 में एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नॉट नॉट I'm not sure about krypton, okay, but neon, argon, helium, etc. All these are noble gases in group number 18. So all the elements will try to have their electronic configuration. Why? क्योंकि उनका काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो जो नोबल गैसेस होते हैं या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं, उसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है हमेशा। सो ऑल एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू हैव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो कोई भी पास में होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको बनाना है। ओके, सो कार्बन को या तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या फिर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए टू बिकम मोर स्टेबल। ओके, but it cannot accept or donate 4 electrons because it needs lot of energy, and C4 plus and C4 minus will be unstable. Okay, so अगर समझो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं। ओके, so let us try to imagine this. Okay, here you have a carbon atom and it wants to accept 4 electrons. So carbon first has 6 electrons, then it accepted 1 electron. Okay, तो अभी 7 electrons हो गए। 7 electrons से कार्बन पे प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज आ गया, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज एक्सेप्टेड नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन अभी नेगेटिव बन गया। सो कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज -1, बिकॉज कार्बन हैज -1 चार्ज। एक और इलेक्ट्रॉन लेना और मुश्किल हो जाएगा और एनर्जी लेगा। क्यों? बिकॉज कार्बन इज ऑलरेडी नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। ओके, ये लोग एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन और कार्बन। कार्बन 1 माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है। समझो तुम लोग ने बहुत ज्यादा एनर्जी देके कार्बन ने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। कार्बन ने अगर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अभी कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा? 2 माइनस, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का -2 चार्ज आ जाएगा। सो अगेन कार्बन का नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। Now, if the third electron tries to come and go inside carbon atom, it will be even more difficult, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी -2 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, तो और एनर्जी लगेगा। समझो और भी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देके तुम लोग ने थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन एटम में डाल दिया। सो अभी कार्बन पे -3 चार्ज है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, -3 चार्ज, और अभी सब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अभी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू एंटर द कार्बन एटम, बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज है, सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, सो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली इफ कार्बन को अगर समझो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, सो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा। समझो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो अभी कार्बन पे क्या चार्ज होगा? +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ही है, सो नेट पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। सो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, एंड नाउ कार्बन हैज टू डोनेट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, राइट, न्यूक्लियस के पास, क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली समझो तुम लोग ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सो कार्बन पे +2 चार्ज आ गया, मोर पॉजिटिव चार्ज, यानी उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और जोर से खींचेगा बीच में, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, बोथ आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो तुम लोग को अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझो और एनर्जी देके तुम लोग ने थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया। सो नाउ कार्बन एटम पे +3 चार्ज है, सो +3 चार्ज, तो आजू बाजू के जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स वो और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस के पास, तो उसको निकालना और मुश्किल हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको अगर तुम्हें निकालना है जब ऑलरेडी कार्बन पे +3 चार्ज है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओनली देन you will be able to take out 4 electrons. Okay, so hence accepting or donating 4 electrons is not an option for carbon because it needs lot of energy. Okay,
और समझो तुम लोग ने बहुत ज्यादा एनर्जी देके कार्बन 4+ या फिर कार्बन 4- बना भी दिया, दे विल बी अनस्टेबल बिकॉज इतने छोटे से एटम पे इतना ज्यादा चार्ज है, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड इट विल फॉर्म अदर कंपाउंड्स, वो ऐसा स्टेबल नहीं रह पाएगा. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद कार्बन, कार्बन कंपाउंड्स और कार्बन एलिमेंट. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर उसको लास्ट का ऑर्बिट कंप्लीटली फिल या कंप्लीटली एम्प्टी करना है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट और डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द रीजंस ओवर हियर, रीजंस डिस्कस्ड ओवर हियर. सो हेंस कार्बन क्या करेगा, कार्बन विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं करेगा, उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, उससे अच्छा वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा. ओके. Okay, now let us look at one end of chapter question given on page number 133, which says explain the following terms with example. So you have to explain covalent bond in the second question. Okay, so know what is covalent bond? It's sharing of electrons, and we know that carbon is a covalent compound. Okay, so now you have to just explain it using an example. So this is how the answer will look like. First you have to explain covalent bonds. So the chemical bond which is formed by sharing of two valence electrons. Why valence electrons? क्योंकि अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वो बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, राइट? एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड फर्स्ट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, सो देयर विल ऑलवेज बी टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? So the chemical bond which is formed by sharing of two valence electrons between two atoms is called as covalent bond. Okay, this is the definition of covalent bond. Now I have to explain this covalent bond using an example. So the example given here is formation of H2 molecule. So H2 is hydrogen, right? And hydrogen कभी भी nature में एक एक atom नहीं मिलता. You will always get two atoms together which are bonded by covalent bonds. So this we can explain using covalent bonds. So atomic number of hydrogen is 1. It has one electron in its valence shell, right? क्योंकि उस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके लास्ट ऑर्बिट में या फिर उसका फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. And requires one more electron to complete its duplet. अगर उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, see here they have drawn hydrogen, right? इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. And attain stable electronic configuration of helium. What did I tell you? Every element tries to attain the electronic configuration of its nearest noble gas. So हाइड्रोजन के सबसे पास में नोबल गैस कौन सा है? हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए so that it becomes stable. Okay, therefore two hydrogen atoms share their electrons with each other to form hydrogen molecule. Okay, so here you have one hydrogen atom, here you have one hydrogen atom, both of them have one electron and both of them need one electron to complete their orbit. So what they're going to do, they are going to share. So ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट? सो दोनों ने अभी both of them are sharing their electrons and both of them have completed their duplet. Okay, a single covalent bond is formed between two hydrogen atoms by sharing of 2 electrons. Okay, so ये जो sharing है, इसको this sharing we call as covalent bond, right? And वो covalent bond को दिखाने के लिए we just put a dash in between. So as I told you, right, यहाँ पे ऐसा एक्चुअल में डैश होता नहीं है, वो हम लोग डैश खुद के लिए बना देते हैं so that we can easily see how the bonds are forming and किसके साथ क्या bonding हो रही है, right? So this is called the dot structure and this is called the line structure. Okay, so what is dot structure, what is line structure, so that we can easily see covalent bonds, that we're going to look into in the next learning session. Okay, so we have explained what is a covalent bond and we have explained covalent bonds through an example of hydrogen molecule. So we are done with this question also. Okay, so that's it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objective, which was students will be able to explain covalent bonds in compound, okay, in carbon. So just check, do you know what are the two different types of bonds, ionic bond and covalent bond? Can you explain what is ionic bond? Can you explain what is covalent bond? Can you tell me the difference between ionic and covalent bond? And can you tell me why in carbon it cannot have ionic bond? वो भी explain करना आना चाहिए. And can you explain why instead of having ionic bonds, carbon will rather have covalent bonds? All these things you should be able to explain at the end of the learning session. Okay, so that's it for this learning session.
I hope you all understood, and we'll see each other in the next one. Till then, bye, peace, and have a nice day.